Bismillahirrahmanirrahim. Let's start the Bohr's model of atom. The Planck's quantum theory was extensively used by Bohr in order to explain his model of atom. हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में ये बात कर चुके हैं that energy is emitted in the form of small packets of energy और इन small wave packets को हम क्वांटा कहते हैं. अगर हम लाइट की बात कर रहे हो तो energy is emitted in the form of small packets of energy called as photon. According to Bohr, electron, for example in the hydrogen atom, can exist only in certain permitted quantized energy levels. So one of the postulates of Bohr atomic model can be that electron revolves in one of the circular orbit outside the nucleus. और याद रहे कि each orbit has a fixed energy, या हम कह सकते हैं कि हर orbit का अपना एक quantum number है. जब तक एक इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ना ही एनर्जी इमिट होगी ना एनर्जी एब्जॉर्ब होगी. So another postulate of Bohr atomic model is energy is neither emitted nor absorbed while an electron is revolving in the same fixed orbit. Energy emit or absorb कब होगी? When an electron jumps from one orbit to another orbit. For example, एक इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है, या हम कह सकते हैं फ्रॉम इनर ऑर्बिट टू आउटर ऑर्बिट जा रहा है, यानी एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है फ्रॉम इनर ऑर्बिट टू द आउटर ऑर्बिट. फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, इस मूवमेंट के लिए एनर्जी विल बी एब्सॉर्ब्ड. Whereas if electron jumps from the outer orbit to inner orbit, यानी अपनी excited state से वो वापस ground state में आएगा, तो energy will be emitted. So this was explained by Bohr that जब तक एक इलेक्ट्रॉन अपनी फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ना ही एनर्जी इमिट करेगा ना एब्जॉर्ब करेगा. एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब तब होगी when an electron moves from one orbit to another. इस तरफ मैंने चेक किया था. So we can say that the difference of energy will be given by delta E is equals to E2 minus E1, which will be equal to hv. As we know from the Planck's quantum theory as well, that E, that is the energy of radiation, is equal to Planck's quantum multiplied by the frequency of the radiation. ये E2 और E1 क्या है? Actually, this delta E is the difference of energy between the two orbits, और उन orbits की energy को हमने E1 और E2 कहा है. Now coming to another postulate of Bohr atomic model, and that is electron can revolve only in those orbits having a fixed angular momentum. Angular momentum is actually mvr is equals to nh over 2 pi. यानी हम कह सकते हैं कि angular momentum depends upon its quantum number. So angular momentum depends upon its quantum number, and we can say that it is an integral multiple of the factor h over 2 pi, whereas n is the quantum number and it can be 1, 2, 3, so on. So हम कह सकते हैं कि the permitted values of angular momentum can be h over 2 pi, 2h over 2 pi, 3h over 2 pi, and so on. याद रहे that electron is bound to remain in one of these orbits. It cannot be present between them. So we can say that angular momentum is quantized.